What is the chat? We are here. Doing machine learning, continuing. Let me adjust. Good. Let me share the screen. Day-7 was completed, right? Day-7 was completed. What we had day-2. Sailing on a boat headed towards StatQuest. Join me on this boat, let's go to StatQuest. Is it not what I'm हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। देखो अभी लीनियर रिग्रेशन के बारे में आज हम लोग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, उसके जो बेसिक्स है, अगर आपको कोई आधी रात को भी जगा के पूछ ले कि भैया क्या होता है लीनियर रिग्रेशन, तो आप बता पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आफ्टर दिस वीडियो एक बार आप ये वीडियो देखो तो आप बता पाओगे कि भैया लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, उसकी बेसिक आइडिया क्या होता है, उसको क्यों यूज किया जाता है, उसके बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में मैं बता देने वाला हूं। ठीक है, तो बट बिफोर
क्या होता है लीनियर रिग्रेशन, तो आप बता पाओ। बिफोर मूविंग टू लीनियर रिग्रेशन भाई सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिग्रेशन इटसेल्फ होता क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है। सी क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के क्या माजरा है भैया, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, आपको एक काम दे दिया गया है और बोला गया है कि आपको इस कंपनी का एनुअल सेल जो है वो फाइंड आउट करना है कि भैया इस कंपनी का इस साल में कितना एनुअल सेल हुआ है, ये आपको फिगर जो है वो एक न्यूमेरिक फिगर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मेरे एनुअल सेल को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स मेरे जो इंडस्ट्री है यानी कि जो कंपनी उसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉय कितने हैं, बराबर है कि नहीं, प्रोडक्ट कितना बिका, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सारी चीजें जो ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपके एनुअल सेल को अफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका जो एनुअल सेल आपको फाइंड करना है, एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक कंटीन्यूअस वैल्यू जो आपको ये फाइंड करनी है, इट इज योर सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी आपको आइडिया समझ में आ गया कि भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, एग्जांपल देके समझा दिया। अभी अगर आपको इस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, यू हैव टू मॉडल अ रिलेशनशिप बिटवीन द dependent variable and independent variables, then the best thing that you can do is the regression analysis। तो यहाँ पे आप regression analysis यूज कर सकते हो and most prominently वहां पे regression analysis यूज कर सकते हो जहां पे आपको जो आउटपुट वैल्यू चाहिए, यानी कि इन दिस केस डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए वो अगर न्यूमेरिक नेचर का होगा, कंटीन्यूअस नेचर का होगा, वही मैंने लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटीन्यूअस इन नेचर। सादी भाषा में आपका नंबर होना चाहिए, वो कोई कैरेक्टर वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सीधा साधा सा नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो वो बेस्ट केस होगा कि जब आप यहाँ पे रिग्रेशन को यूज करोगे, ठीक है। तो उसके अंदर भी दो टाइप्स आती है, बराबर, एक लीनियर रिग्रेशन है और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। यहाँ पे इस वीडियो में पहले लीनियर रिग्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारा एक, ठीक है। तो अभी इस केस में वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस होता है नेचर में, बराबर, और जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप होती है, जो हमें मॉडल करनी है, जो रिलेशनशिप हमें मॉडल करनी है, वो रिलेशनशिप इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज ऑफ लीनियर नेचर, इज ऑफ लीनियर नेचर। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है, एक आपका ये इंडिपेंडेंट फीचर है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस इज द इंडिपेंडेंट रिलेशन। कैसा है, तो लीनियर रिग्रेशन में आपको एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा। ये जो भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट डेटा पॉइंट्स जो कि आपके डेटा सेट के अंदर मौजूद हैं। तो वो डेटा पॉइंट्स एक तरीके से लीनियर डेटा सेट आपने यूज किया, और लीनियर डेटा सेट अगर आपने यूज किया है तो लीनियर मॉडल आपको यूज करना पड़ेगा, यानी लीनियर रिग्रेशन इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू दैट यू कैन अप्लाई इन दैट। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अभी लीनियर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी रिस्पेक्टिवली इसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब एक दूसरे को एक तरीके से वो प्रोपोर्शनल है, दे आर लीनियर इन नेचर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज आपको बता देता हूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन काउंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि भैया कितने फैक्टर्स हैं जो कि आपके एनुअल सेल को अफेक्ट कर रहे हैं। एक फैक्टर है, दो है, तीन है, चार है, कितने फैक्टर है भाई, उससे भी आपके दो डिफरेंसेस निकल के आते हैं। कि अगर बाय चांस एनुअल सेल को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ऑब्वियसली एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस सिचुएशन में, उस केस में हम उसे कहेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और उस सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इन द बेस्ट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो आप लीनियर, सिंपल लीनियर इक्वेशन यूज करते हो। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या है, ये है, क्या है कि भैया x1 मतलब क्या, आपका वो सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि फीचर है, एक एट्रीब्यूट है। सो x1 क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, ऑब्वियस सी बात है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x क्या था मेरा यहाँ पे, इट वाज सिंपली अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या था मेरा, ये आउटपुट वेरिएबल है, यानी कि आउटपुट वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया भाई मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटपुट मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए वो आपका y है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी आप बोलोगे भैया ये अल्फा क्या है, अल्फा 0 अल्फा 1 ये क्या है, दीज आर सिंपली द कोएफिशिएंट्स। किसके कोएफिशिएंट है भाई, पड़ोसी वाले के नहीं, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे लगा के रखे हैं, बराबर। इनके बारे में और भी हम लोग डिटेल में आगे जानकारी हासिल करने वाले हैं, बट यहाँ पे आप समझ लो कि भैया ये जो दिख रहा है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो अल्फा दिख रहे हैं आपको, दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को मैं कुछ ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं
कि जो आपको इजीली आइडेंटिफाई आप उसे कर पाओ। ऐसे फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? इन दिस फॉर्म। ये फॉर्म पहचाना हुआ, जाना पहचाना लग रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c क्या है आपका एक तरीके से, ये यहाँ पे m क्या है? m इज सिंपली स्लोप। m इज सिंपली स्लोप मतलब जब आप ऐसी आप स्लोप्ड लाइन ड्रॉ करते हो, जब भी आप ऐसी स्लोप्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो उसमें आप m स्लोप निकालते हो और c क्या है? आपका इंटरसेप्ट है, आपका इंटरसेप्ट है। तो ये जो इक्वेशन है आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहाँ पे मैप अप कर सकते हो। करेक्ट और नॉट? सो द सेम सिंपल लीनियर इक्वेशन कैन बी शोन इन दिस फॉर्म। जस्ट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भैया ये आपका एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है, ये आपका स्लोप है ऑफ द मॉडल दैट यू हैव ड्रॉन और लाइन यू हैव ड्रॉन, ये आपका इंटरसेप्ट है और ये आपका सिंपली जो फाइनल आउटपुट वेरिएबल बोल लो या डिपेंडेंट वेरिएबल बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे तो भैया सिंपल लीनियर इक्वेशन का फंडा समझ में आ गया। कि आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को। क्या कॉम्प्लिकेट करेंगे कि अगर मुझे एनुअल सेल फाइंड करना है तो मेरे पास बाई चांस एक से ज्यादा फैक्टर है तो क्या किया जाए भाई? मतलब यहाँ पे सिर्फ x1 नहीं है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी, x5 भी, x6 भी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, m फैक्टर्स हैं। तो भैया ये यूज करो ना। तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किसे बोलते हैं? कि जब हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं और सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस केस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और उसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय मल्टीपल लीनियर इक्वेशन व्हिच इज बीन शोन हियर। सेम फंडा है, कोई अलग नहीं है। y है, ये आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, ये x1 x2 x3 xm, ये कितने हैं भैया आपके? हाउ मेनी आर दीस? जो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कितने? m आपके ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, m आपके ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोल सकते हैं। y इज योर सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। xi क्या है? ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ऑब्वियसली अल्फा i क्या है आपका? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो अभी मैं इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मतलब मल्टीपल लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ मैंने अल्फा की जो वैल्यूज है वो मैंने उसमें डाल दी है। x1 x2 की कोई Damn. એટલો મોટા નથી લ્યા બરોબર છે ચશ્માની નોટ તું આ કર કેવું પડે ભાઈ કોંગ્રેચ્યુલેશન કોંગ્રેચ્યુલેશન પાર્ટી ક્યારે આપવાના પાર્ટી એની કમેન્ટ્સ આટલો મોટો રિએક્શન તો આલ્યો સ્ટ્રીમ પાછળ કરીને જો PCR
वेरिएबल एंड ऑब्वियसली अल्फा है क्या है आपका। मैं इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मतलब मल्टीपल लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ मैंने अल्फा की जो वैल्यूज है वो मैंने उसमें डाल दी है, x1 x2 की कोई वैल्यू नहीं डाली, y की वैल्यू फाइंड नहीं की है, सिर्फ मुझे किसे एक्सप्लेन करना है, अल्फा को, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को एक्सप्लेन करना है, इसीलिए मैंने सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप की हुई। तो देखते हैं क्या होता है। y is equal to 0.9 1.2x1 2x2 plus 4x3 plus 1x4, तो ये चीजें यहाँ मेंशन की हुई है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा 0 की वैल्यू ये है, अल्फा 1 की वैल्यू ये है, अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दिस, तो रिमेंबर एक जो आपका एट्रीब्यूट है या फिर जिसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो या फिर सिंपली एक फीचर कहते हो, आपके डेटा सेट का एक फीचर कहते हो, तो वो फीचर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपैक्ट डालता है आपके आउटपुट वेरिएबल के ऊपर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ दैट अल्फा। कहने का मतलब ये कि अभी इसमें इन सभी अल्फाज में से, मतलब अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इन सभी में से अल्फा 4 सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस अल्फा की है। ऑब्वियसली आप यहां नोट कर सकते हो अल्फा 3, अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है 4, सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अल्फा से, मतलब इस कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो मेरा फीचर है यानी कि x3, इससे रिलेटेड, इस कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो मेरा फीचर है यानी कि x3, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही है फॉर डिटरमाइनिंग द y करेक्टली एक्यूरेटली। बराबर, एक एग्जांपल आपको मैं जैसे देता हूं कि जैसे कि आपका रिजल्ट है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल ले लो, आपका रिजल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दो फीचर्स हैं। कौन से दो फीचर हैं, एक तो आपका सिंपली जो रोल नंबर आईडी, और दूसरा है आपके परसेंटेज। बराबर, तो ये दो फीचर्स है। नाउ रिमेंबर, अभी आप कॉमन सेंस बता सकते हो कि ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेरे पास यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है रिजल्ट। तो अभी मेरा रोल नंबर या फिर जो मेरा रोल आईडी है और मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग द रिजल्ट, कि मतलब परसेंटेज के ऊपर आप मेरा रिजल्ट निकाल सकते हो कि 35 के ऊपर है तो भैया पास है, 35 के नीचे तो फेल है। तो मतलब ये जो मेरा परसेंटेज, ये जो मेरा फीचर है, ये जो मेरा एट्रीब्यूट है, ये जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये स्ट्रांगली इंपैक्ट कर रहा है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को, स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और अगर रोल आईडी को देखोगे तो वो इतना अफेक्ट नहीं करता, मेरा रोल नंबर चाहे 35 हो, 70 हो, 120 हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं कि मैं पास हूं या फेल हूं। बराबर, तो वो इतना इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जितना कि हमारा जो परसेंटेज वाला फीचर है वो डाल पा रहा है। इसीलिए जो मेरा परसेंटेज वाला फीचर है वो जिस कोएफिशिएंट से रिलेटेड होगा, यानी कि इन दिस केस फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये वाला जो है, ये वाला जो मेरा फीचर है वो मान लो परसेंटेज का है, और ये वाला जो फीचर है कहां गया, ओके, ये वाला जो फीचर है वो रोल नंबर आईडी का। तो अभी आप इसमें गेस कर सकते हो कि x3 रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज, x4 represents the roll number ID. तो x3 is very important, percentage is very important to determine the result. roll number is not that much important to determine the result. तो इसीलिए x3 से रिलेटेड जो उसका अल्फा है, यानी कि अल्फा 3, यानी कि उसका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद द अल्फा 4। तो अल्फा 3 की, तो यहाँ पे अल्फा 3 की जो वैल्यू है, इट इज मच मोर ग्रेटर, आई शुड से मच मोर ग्रेटर देन अल्फा 4। व्हाई? बिकॉज दिस factor or this feature, this variable is very important to decide the value of y। तब जगह हमें यहाँ पे पता चलेगा कि भैया क्या है रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट। बराबर, कितना है रिजल्ट, कैसा है रिजल्ट। तो यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो रिजल्ट को, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी, जितनी भी बेसिक्स मैं बता सकता था आपको। हाँ, एक और चीज रह गई, बस एक ही चीज रह गई है। तो अभी आप बोलोगे अल्फा की वैल्यूज आई कहां से, फ्रॉम वेयर दीज अल्फा वैल्यूज केम। मतलब अल्फा वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, सिंपली अल्फा वैल्यू सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि वो अल्फा,
मतलब वो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जिस फीचर के साथ, जिस वेरिएबल के साथ वो रिलेटेड है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना अफेक्ट करता है आपके आउटपुट वेरिएबल को, बराबर, ये वो सिंपली दर्शाता है। तो इस केस में x3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज उसका जो कोएफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा है, 4 है, उसकी वैल्यू 4 है उस कोएफिशिएंट की, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो x3 है। लेकिन ये अल्फा की वैल्यू डिसाइड कौन करता है, डिसाइड कैसे करता है, डिसाइड कब करता है? तो सिंपल सी बात है, जब आप अपना ये पूरा का पूरा डेटा सेट ट्रेनिंग को देते हो, मतलब ट्रेनिंग फेज में देते हो, तो वहां से लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है, वहां पे लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है, और उस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू समझ में आता है कि भैया ये जो पर्टिकुलर फीचर है, ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, ये जो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एट्रीब्यूट है, ये बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है आपके आउटपुट वेरिएबल को। तो ये बहुत ही आईएमपी फीचर है। तो अगर ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी फीचर है, तो उसका जो रिलेटेड कोएफिशिएंट होना चाहिए, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई एक ऐसा फीचर है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इन द ट्रेनिंग फेज, अगर बाय चांस कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बिल्कुल भी अफेक्ट ही नहीं कर पा रहा, बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पा रहा आउटपुट वेरिएबल को, कुछ भी अपनी तरीके से इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा ऑन द डिसाइडिंग द आउटपुट वेरिएबल, तो उसका जो रिस्पेक्टिव, मतलब जैसे कि x4 है, x4 मेरा रोल नंबर आईडी था, वो इतना कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भैया एक स्टूडेंट कि अगर मुझे रोल नंबर आईडी दिया जाए तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि भैया उस स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होगा। आई कैन प्रिडिक्ट, कुछ भी हो सकता है रोल नंबर, और उसका रिजल्ट भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ये रोल नंबर जो है दैट इज x4, इस केस में x4 जो है, जो मेरा एट्रीब्यूट है, इट इज नॉट एबल टू मेक दैट मच इंपैक्ट, इतना अफेक्ट नहीं कर पा रहा आउटपुट रिजल्ट को, इसीलिए भाई उसका मैंने क्या ले लिया, सिंपल सा 1 ले लिया, उसका रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, तो उसको वैल्यू मैंने कम दी, और जो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है उसको वैल्यू मैंने ज्यादा दी। कब? जब ये लर्निंग होता है ट्रेनिंग फेज में, तो तब पता चलता है कि भैया कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा फीचर कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सम अप करूं, तो जिसकी अल्फा की वैल्यू, जिस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा, यानी कि जिस वेरिएबल से रिलेटेड जो कोएफिशिएंट है, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब भाई वो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रिजल्ट, y को डिटरमाइन करने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है x, इन दिस केस x यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर बाय चांस कम है अल्फा की वैल्यू, तो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि इन दिस केस 1, 1.2, तो वो इतने, मतलब कि x1 एंड x4, क्योंकि उनके जो कोएफिशिएंट है 1.2 एंड 1, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनकी जो कोएफिशिएंट वैल्यू बहुत कम है, सो दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द रिजल्ट, यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बेसिक आइडिया मिल चुकी होगी कि भाई लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो सारी जो
StatQuest is moving. And lastly, how to this video, I'll be talking about neural networks. I went through hundreds of courses, watched countless tutorials, and compared the most popular learning paths for machine learning. And you know what I found? Everyone says something different. Some tell you to start with Python, others throw complex math at you right away. It's no wonder so many people feel confused and stuck before they even begin. But here's the truth, you don't need to learn everything. You just need to learn the In the next we know Hello everyone, welcome to this tutorial by Simply Learn. In this video, you will learn about an interesting machine learning topic, that is supervised versus unsupervised versus reinforcement learning. Let's discuss each of them in detail and understand when to use these algorithms along with their applications. Now there are a number of algorithms used in the field of machine learning can be classified into a certain category. So the different types of machine learning algorithms are supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Now, let's look at the definition of each of these learning techniques. Learning uses labeled data to train machine learning models. Labeled data means that the output is already known to you. The model just needs to map the inputs to the outputs. An example of supervised learning can be to train a machine that identifies the image of an animal. Below you can see a picture of a cat. Unsupervised learning uses unlabeled data to train machines. Unlabeled means there is no fixed output variable.
The model learns from the data, discovers patterns and features in the data, and returns the output. Here is an example of an unsupervised learning technique that uses the images of vehicles to classify if it's a bus or a truck. So the model learns by identifying the parts of a vehicle, such as the length and width of the vehicle, the front and rear end covers, roof hoods, the types of wheels used, etc. Based on these features, the model classifies if the vehicle is a bus or a truck. In a particular situation, it uses an agent and an environment to produce has a start and an end state, but there might be different paths for reaching the end state like a maze. In this learning technique, there is no predefined target variable. An example of reinforcement learning is to train a machine that can identify the shape of an object given a list of different objects such as square, triangle, rectangle, or a circle. In the example shown, the model tries to predict the shape of the object, which is a square here. Now, let's look at the different machine learning algorithms that come under these learning techniques. Some of the commonly used supervised learning algorithms are linear regression, logistic regression, support vector machines, k-nearest neighbors, decision tree, random forest, and naive Bayes. Examples of unsupervised learning algorithms are k-means clustering, hierarchical clustering, DB-scan, principal component analysis, and others. Depends on the type of problem you are trying to solve. Some of the important reinforcement learning algorithms are Q-learn, Monte Carlo, SARSA, and deep Q network. Now let's look at the approach in which these machine learning techniques work. So supervised learning takes labeled inputs and maps it to known outputs, which means you already know the target variable. Unsupervised learning finds patterns and understands the trends in the data to discover the output. So the model tries to label the data based on the features of the input data. While reinforcement learning follows trial and error method to get the desired solution. After accomplishing a task, the agent receives an award. An example could be to train a dog to catch the ball. If the dog learns to catch a ball, you give it a reward such as a biscuit. Now, let's discuss the training process for each of these learning methods. So supervised learning methods need external supervision to train machine learning models, and hence the name supervised. They need guidance and to return the result. Unsupervised learning techniques do not need any supervision to train models. They learn on their own and predict the output. Learning methods do not need any supervision to train machine learning models. And with that, let's focus on the types of problems that can be solved using these three types of machine learning techniques. So supervised learning is generally used for classification and regression problems. We'll see the examples in the next slide. And unsupervised learning is used for clustering and association problems. While reinforcement learning is reward based, so for every task or for every step completed, there will be a reward received by the agent. And if the task is not achieved correctly, there will be some penalty used. Now, let's look at a few applications of supervised, unsupervised, and reinforcement learning. As we saw earlier, supervised learning are used to solve classification and regression problems. For example, you can predict the weather for a particular day based on humidity, precipitation, wind speed, and pressure values. You can use supervised learning algorithms to forecast sales for the next month or the next. Similarly, you can use it for stock price analysis or identifying if a cancer cell is malignant or benign. Now, talking about the applications of unsupervised learning, we have customer segmentation. So based on customer behavior, likes, dislikes, and interests, you can segment and cluster similar customers into a group. Another example where unsupervised learning algorithms are used is customer churn analysis. Now, let's see what applications we have in reinforcement learning. So reinforcement learning algorithms are widely used in the gaming industries to build games. It is also used to train robots to perform human. And with that, we have come to the end of this video on supervised versus unsupervised versus. Hi guys, I'm Anirban from Simply Learn, and today I will be giving you a tutorial on one of the most talked about topics in the world of technology, and that is machine learning. I'm sure that if you are watching this video, you must have heard about machine learning somewhere or the other. And yes, it is quite an intriguing topic. This video will act as a supplement for the ones who know the basics of machine learning and are aware of where it is being used and how it is being used. For the ones who are completely new to this, you don't have to worry. We will be brushing up the basics as well. So to start off with, let's have a look at the agenda. First, we'll look into a life without machine learning. Then we'll move into a life with machine learning. Then we'll try to understand what is machine learning actually. Then we'll look into the types of machine learning. We'll talk about the right machine learning solutions. Then we'll move into the different algorithms that machine learning has. Let's talk about a life without machine learning. For someone who doesn't know anything about machine learning or artificial intelligence, dive in a little deeper and see how machine learning works. Let's say you provide a system with the input data that carries the photos of various kinds. You want the system to figure out what are the different fruits and group them accordingly. So what the system does, it analyzes the input data. Then it tries to find patterns like shapes, size, and color. Based on these patterns, the system will try to predict the different types of fruit and segregate them. Finally, it keeps track of all such decisions it took in the process to make sure it's learning. The next time you ask the same system to predict and segregate the different types of fruits, it won't have to go through the entire process again. That's how machine learning works. Now let's look into the types of machine learning. Machine learning is primarily of three types. First one is supervised machine learning. As the name suggests, you have to supervise the machine learning while you train it to work on its own. It requires labeled training data. Next up is unsupervised learning, wherein there will be training data but it won't be labeled. Finally, there's reinforcement learning, wherein the system learns on its own. Let's talk about all these types in detail. Let's try to understand how supervised learning works. Look at the pictures very, very carefully. The monitor depicts the model or the system that we are going to train. This is how the training is done. We provide a dataset that contains pictures of kind of a fruit, say an apple. Then, we provide another dataset which lets the model know that these pictures were that of a fruit called apple. This ends the training phase. Now, what we will do is we provide a new set of data which only contains pictures of apple. Now here comes the fun part. The system can actually tell you what fruit it is. And if you remember this and apply this knowledge in the future as well, that's how supervised learning works. You are training the model to do a certain.
This kind of a model is generally used in filtering spam mails from your email accounts as well. Yes, surprised, aren't you? So let's move on to unsupervised. We have a data set which is cluttered. In this case, we have a collection of pictures of different fruits. We feed this data to the model, and the model analyzes the data to figure out patterns in it. In the end, it categorizes the photos into 3 types, as you can see in the image based on the similarities. So you provide the data. Remember what happened the last time and would not repeat what it did. That's exactly how reinforcement learning works. We provide the machine with a data set wherein we ask it to identify a particular kind of a fruit, in this case an apple. So what it does as a response, it tells us that it's a mango. But as we all know, it's a completely wrong answer, so as a feedback, we tell the system that it's wrong, it's not a mango, it's an apple. What it does, it learns from the feedback and that in mind. On the next time, when we question, it does the right answer. It is able to tell us that it's actually an apple. That is a reinforced response. So that's how reinforcement learning works. It learns from its mistakes and experiences. This model is used in games like Prince of Persia or Assassin's Creed or FIFA, wherein the level of difficulty increases as you get better with the games. Just to make it more clear for you, let's look at a comparison between supervised and unsupervised learning. Firstly, the data involved in case of supervised learning is labeled. As we mentioned in the examples previously, we provide the system the photo of an apple and let the system know that this is actually an apple. That is called label data. So the system learns from the label data and makes future predictions. Now, unsupervised learning does not require any kind of label data because its work is to look for patterns in the input data. And the next point is that you get a feedback in case of supervised learning. That is, once you get the output, the system tends to remember that and uses it for the next operation. That does not happen for unsupervised learning. It's mostly used to predict data, whereas unsupervised learning is used to find out hidden patterns or structures in data. I think this would have made a lot of things clear for you regarding supervised and unsupervised learning. Now, let's talk about a question that everyone needs to answer before building a machine learning model. What kind of a machine learning solution should we use? Yes, you should be very careful with selecting the right kind of solution for your model, because if you don't, you might end up losing a lot of time, energy, and processing cost. I won't be naming the actual solutions because you guys aren't familiar with them yet. So we will be looking at it based on supervised, unsupervised, and reinforcement learning. So let's look into the factors that might help us select the right kind of machine learning solution. First factor is the problem statement describes the kind of model you will be building, or as the name suggests, it tells you what the problem is. For example, let's say the problem is to predict the future stock market prices. So for anyone who is new to machine learning, will have trouble figuring out the right solution. But with time and practice, you will understand that for a problem statement like this, solution based on supervised learning would work the best for obvious reasons. Then comes the size, quality, and nature of the data. If the data is cluttered, you go for unsupervised. If the data is very large in category. Finally, we choose a solution based on the complexity. As for the problem statement, it can also be solved by using reinforcement learning, but that would be very, very difficult and time-consuming, unlike supervised learning. Algorithms are not types of machine learning. In the most simplest language, they are methods of solving a particular problem. So the first kind of method is classification, which falls under supervised learning. Classification is used when the output you are looking for is a yes or a no, or in the form A or B, or true or false. Like if a shopkeeper wants to predict if a particular customer will come back to his shop or not, he will use a classification algorithm. That fall under classification are decision tree, knife base, random forest, logistic regression, and KNN. It's regression. This kind of a method is used when the predicted data is numerical in nature. Like if the shopkeeper wants to predict the price of a product based on its demand, it would go for regression. The last method is clustering. Clustering is a kind of unsupervised learning. It is used when the data needs to be organized. Most of the recommendation systems used by Flipkart, Amazon, etc. make use of clustering. Another major application of it is in search engines. The search engines study your old search history to figure out your preferences and provide you the best search results. Now we know the various algorithms with very simple examples. The 4 algorithms that we will try to understand are k-nearest neighbor, linear regression, decision tree, and knife based. Let's start with our first machine learning solution, k-nearest neighbor. K-nearest neighbor is again a kind of a classification algorithm. As you can see on the screen, the similar data points form clusters. The blue one, the red one, and the green one. There are 3 different clusters. Now if we get a new and unknown data point, it is classified based on the cluster closest to or the most similar to it. K in KNN is the number of nearest neighboring data points we wish to compare the unknown data with. Let's make it clear with an example. Let's say we have 3 clusters in a cost durability graph. First cluster is of footballs, the second one is of tennis balls, and the third one is of basketballs. From the graph, we can say that the cost of footballs is high and the durability is less. The cost of tennis balls is very less, but the durability is high. The cost of basketballs is as high as the durability. Now let's say we draw a circle keeping the unknown data point in the center, and we make sure that we have 5 balls inside that circle. In this case, we have a football, a basketball, and 3 tennis balls. Now, since we have the highest number of tennis balls inside the circle, the classified ball would be tennis ball. So that's how k-nearest neighbor classification is done. Linear regression is again a type of supervised learning algorithm. This algorithm is used to establish linear relationship between variables, one of which would be dependent and the other one would be independent. If you want to predict the weight of a person based on his height, weight would be the dependent variable and height would be independent. Let's have a look at it through an example. Let's say we have a graph here showing the relationship between height and weight of a person. So 3 dots are the various data points. These 3 dots are the data points. Is the mean squared error, that is the perpendicular distances from the line to the data points, are the error values. This error tells us how much the predicted value vary from the original value. Let's ignore this blue line for a while. So let's say if this is our regression line, you can see the distance from all the data points from this line is very high. So if we take this line as a regression line, the error prediction will be too high. So in this case, the model will not be able to give us a good prediction. Let's say we draw another regression line like this. Even in this case, you can see that the perpendicular distance of the data points from the line is very high. So the error value will still come as high as the last one. So this model will also not be able to give us a good prediction. So what to do? So finally, we draw a line which is this blue line. So here we can see that the distance of the data points from the line is very less relative to the other 2 lines we drew. So the value of t for this line will be very less. So in this case, if we take
Any value on the x-axis, the corresponding value on the y-axis will be prediction should be good also. This is how regression works. We draw a line, the value of t is the least, essentially giving us good predictions. This algorithm, that is decision tree, is kind of an algorithm you can very strongly relate to. It uses a kind of a branching method to realize the problem and make decisions based on conditions. Let's take this graph as an example. Imagine yourself sitting at home getting bored. You feel like going for a swim. What you do is you check if it's sunny outside. So that's your first. If it's not sunny, then the next question you would ask yourself is if it's raining outside. So that's condition one. If it's actually raining, you cancel the plan and stay indoors. If it's not raining, then you would probably go outside and have a walk. That's the final note. That's how decision tree algorithm works. You probably use this every day. It realizes the problem and then takes the decisions based on the answers to every conditions. This algorithm is mostly used in cases where a prediction needs to be done on a very large data set. It makes use of conditional probability. Conditional probability is the probability of an event, say A, happening, given that another event B has already happened. This algorithm is most commonly used in filtering spam mails in your email account. The model goes through your old spam mail records. Then it uses Bayes' theorem to predict if the present mail. The A of C is the probability of A of B. C is the probability of event C occurring, and A is the probability of event A occurring. Let's understand Bayes with a better result. Bayes can be used to determine on which days to play cricket. Based on the probabilities of a day being rainy, windy, or sunny, the model tells us if a match is possible. Picking other conditions to be event A for us, and the probability of a match being possible event C, the model applies the probabilities of event A and C into the Bayes theorem and predicts if a game of cricket is possible on a particular day. We can be able to play a game of cricket. If it's less than 0.5, we won't be able to do that. That's how algorithm works. So that brings us to the end of the video. I hope you guys understood the concepts. Put your doubts in the comments below and stay tuned for more videos. Hi there. If you like this video,
वहाँ पे कम से कम हम लोग ईडी और फिश इंजीनियरिंग करेंगे गाइस, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा कृष्णा के हिंदी चैनल में। बट हम लोगों को मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में स्टैंडर्डाइज करना है। मैं यहाँ पे रिग्रेशन लिख देता हूँ, कॉमा, इसके बाद मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट और मेरा टेस्ट डेटा सेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y_train। लीनियर रिग्रेशन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे हम लोग, यहाँ डिटेल समझेंगे, हम लोग यहाँ लीनियर रिग्रेशन के हर एक पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, हम उसको हाइपर पैरामीटर ट्यून कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस स्टेटमेंट के लिए मैं एक डेटा सेट लूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस्टन डेटा सेट। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो प्रॉब्ली हम लोग एसके लर्न को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ फ्रॉम एसके लर्न डॉट डेटा लोड अंडरस्कोर बॉस्टन। तो लोड अंडरस्कोर बॉस्टन में क्या है, यहाँ पे आपको एक बॉस्टन हाउस प्राइसिंग डेटा सेट को बेसिकली स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो ये डेटा सेट के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इस डेटा सेट के अंदर क्या क्या है पहली बार। तो चलिए मैं कोई जाके ना थोड़े लाइब्रेरीज और इंपोर्ट कर देता हूँ, जैसे इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट pandas as pd है ना, और इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। ठीक है, तो ये सारा लाइब्रेरीज हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं और ये सारे बेसिक लाइब्रेरीज जो हमको काफी यूजफुल होगा। अब नेक्स्ट चीज है जो डेटा सेट लोड करना है। डेटा सेट के लिए मैंने ऑलरेडी लोड बॉस्टन यूज कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लोड अंडरस्कोर बॉस्टन और मैं अगर इसको कॉल कर दूँ तो आप देखिए यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से तीन चीज आएंगे। एक डेटा आएगा आपका, तो डेटा ये रहा, एक टारगेट की है उसका वैल्यू ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीचर नेम्स और उसका वैल्यू ये रहा। तो यहाँ आपको एंटायर का सारा डेटा इधर विजिबल है, क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। अब मैं यहाँ आगे जाऊँ, ये फीचर्स क्या है ये इन्फॉर्मेशन, ये फीचर्स नाम है। ठीक है, तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। पर कैपिटल क्राइम रेट बेसिक मतलब प्रपोर्शन ऑफ Hi. So little bit of
चल दी अपन, नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू। कहाँ पे है ये? बेसिकली प्रोसेसिंग में है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn.pre-processing import standard। स्टेप में क्या होता है, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन देखिए, इसका प्रोसेस समझिए। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड स्केलर को इनिशियलाइज कर दूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। तो मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद ऑल आई हैव टू डू इज दैट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। तो पहली बात तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का लिख देता हूँ एक्सट्रेन, ठीक है। अब जब मैं ये फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू एक्सट्रेन लिख दूंगा, तो पूरा जो एक्सट्रेन का डेटा सेट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस फॉर्मूला पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिट डेटा फिट भी लिख सकते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हैं, बट यहाँ मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दिया, और मैं एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप देखिए इसका आउटपुट ये आता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सट्रेन में डाल दूंगा, ठीक है। इतना हो गया स्टेप। अब एक्स को भी कुछ करना पड़ेगा, तो एक्स को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब आप मेरे को बताइएगा मैं यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म क्यों लिया था और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्यों लिया था। वैसे भी मैंने इस टाइप की वीडियोस बना दिया मेरे इंग्लिश चैनल में, बट इसका आंसर आप डेफिनेटली दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैंने इसको स्केल अप कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। अगर आपको वापस इसको ये करना है, मतलब अभी फिलहाल के लिए देखेंगे ये वैल्यू है, राइट। पहले कुछ अलग वैल्यू था, कुछ ऐसे टाइप का वैल्यू था। तो अगर आपको इसको इन्वर्स करना है, तो इसको इन्वर्स कैसे करिएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है स्केलर डॉट इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आप डाल दीजिए एक्सट्रेन, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा वैल्यूज वही मिलेगा जो पहले ये सारा वैल्यूज थे, ठीक है। तो आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कभी कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर था, ठीक है। मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप लगा रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, सॉरी मॉडल, और यहाँ मैंने इंपोर्ट करना है लीनियर रिग्रेशन को, क्योंकि यही वाला एल्गोरिथम मैंने अप्लाई करना है, राइट। और यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास मल्टीपल इनपुट फीचर्स है, तो ये बेसिकली हो जाएगा मल्टी लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने टाइम भी आप अगर यहाँ पे पैरामीटर्स देखिए, एक दो ही पैरामीटर है और उससे ज़्यादा पैरामीटर नहीं है, तो हम इसको हाइपर पैरामीटर ट्यून कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है मैं डायरेक्टली रिज और लासो यूज करूँ या इलास्टिक नेट यूज करूँ, अगर इसका भी थ्योरी मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट एक्सप्लेन करके रखा हुआ है मेरे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में। बट हम लोग यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन भी यूज करेंगे। अब क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली क्या करता है कि हम लोग इंटरनली अपना ट्रेनिंग डेटा है ना, उसको बहुत सारा डिवाइड करेंगे, राइट। एक डिवाइड बेसिकली हम लोग उसको मल्टीपल ट्रेन टेस्ट में डिवाइड करके क्रॉस वैलिडेट करेंगे, और हर एक क्रॉस वैलिडेशन का डिफरेंट एक्यूरेसी आता है, और उसको हम लोग कंबाइन करके फाइनली मीन उसका फाइंड आउट करके हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो क्रॉस वैलिडेशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन के लिए हम लोग एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस वैल स्कोर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वैल स्कोर। तो क्रॉस वैल, तो ये मेरा रिग्रेशन ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए मैं क्रॉस वैल स्कोर होगा ये एस्टिमेटर देने का जो मैंने रिग्रेशन बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिग्रेशन लिख देता हूँ, कॉमा, इसके बाद मेरा डेटा सेट और मेरा टेस्ट डेटा सेट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों डेटा सेट में मैं ऑब्वियसली ट्रेनिंग करूंगा। यहाँ पे स्कोरिंग जो पैरामीटर यूज होता है हम लोग ने देखा था, राइट। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में हम लोग ने आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में डेफिनेटली देखा था लीनियर रिग्रेशन में। उसके अलावा हम लोग ने ये भी डिफाइन किया था कि इसके लॉस फंक्शन क्या होते हैं लीनियर रिग्रेशन के, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं तो स्कोरिंग पैरामीटर यहाँ पे अगर आप क्रॉस वैल स्कोर में देखेंगे, तो अगर क्रॉस वैल स्कोर में कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ खोल देता हूँ क्रॉस वैल स्कोर, क्रॉस वैल स्कोर स्केलर। कभी भी डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा इससे आपको और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो यहाँ आपका फर्स्ट पैरामीटर एस्टिमेटर जाता है, उसके बाद एक्स उसके बाद क्रॉस वैलिडेशन कितना करना है वो जाता है, ठीक है। तो उतने टाइम वो क्रॉस वैलिडेट करेगा डिफरेंट एक्यूरेसी चेक करके। और यहाँ होता है स्कोरिंग। अब ये स्कोर पैरामीटर होता है, एक्यूरेसी का पैरामीटर होता है। रिग्रेशन केस में मैं लॉस फंक्शन क्या यूज करता हूँ, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और अगर आपको जानना है कैसे डिफरेंट टाइप्स के स्कोरिंग पैरामीटर है, तो यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप ये पेज में जाएंगे जहाँ पे मॉडल इवैल्यूएशन डॉट एचटीएमएल में होता है sklearn में, यहाँ पे आके हम लोग एक्यूरेसी यूज करते हैं, बैलेंस एक्यूरेसी यूज करते हैं, टॉप की एक्यूरेसी F1 F1 माइक्रो मैक्रो वेटेड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल यूज करते हैं। सिमिलरली रिग्रेशन के केस में हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं, नेगेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर, नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर यूज करना तो मैं ये स्पेसिफिक चीज यूज करूंगा जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर। तो यहाँ से आप डेफिनेटली देख सकते हैं, और वही चीज यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर। तो ये मेरा होगा स्कोरिंग पैरामीटर। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसलिए मैं ऐसा लिखा हूं। तो उसके बाद फाइनली मैं क्रॉस वैलिडेशन कर देता हूं 5 बार, ठीक है। अगर 5 बार क्रॉस वैलिडेट हो रहा है इसका मतलब मेरा 5 डिफरेंट मॉडल्स का उसका मीन कितना आया, उसके बाद इतना आया, थर्ड में इतना आया, फोर्थ में इतना आया, फिफ्थ में इतना आया। अगर वैलिडेशन 10 कर दूं तो इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां लिख दूंगा np.mean ऑफ एमसी। तो काफी अच्छा आ रहा है। हमें याद रखिएगा ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, प्रेडिक्टेड और ट्रूथ वैल्यू का डिफरेंस होता है, तो उसको कम से कम करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब इतना तो हम लोग कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप बेसिकली प्रेडिक्शन करेंगे। अब यहाँ प्रेडिक्शन करेंगे हमारे टेस्ट डेटा। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग ये चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं, हर एक पैरामीटर को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करिएगा, ठीक है। तो रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, और यहाँ स्पेसिफिकली लिख दूंगा मैं एक्स टेस्ट, ठीक है। और ये मेरा होगा नहीं बुलाया, फाइन। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग चीज करने का, तो ठीक है मेरे, और ये मैं एक्स वाई नहीं देता हूँ, मेरा एक्सट्रेन देता हूँ, ठीक है, एक्सट्रेन वाइट, ठीक है, वाइट ट्रेन। हमेशा याद रखिए क्रॉस वैलिडेशन से मैं वेरीफाई किया हूँ कि मेरा कितना आता है यहाँ पे नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर। तो ये हो गया। अब मैं जाके इसको बस एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरा एग्जीक्यूशन हो गया REG_thread, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखिए मेरा सारा प्रेडिक्शन ऑफ वैल्यूज आ गया। अब ये प्रेडिक्शन करेक्ट है कि नहीं, या प्रेडिक्शन कैसा, इसको कंपेयर करेंगे अपने ट्रूथ वैल्यू से। अपने ट्रूथ वैल्यू कहाँ पर है, अपना ट्रूथ वैल्यू वाई टेस्ट है, राइट। वाई टेस्ट है अपना ट्रूथ वैल्यू, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, एक सी बॉन इंपोर्ट कर देता हूँ। देखिए अब मैं इसको बेसिकली देखूंगा एक विजुअलाइज वे में। यहाँ पे मैं SNS.dist प्लॉट यूज करता हूँ, डिस्ट प्लॉट मतलब डिस्टेंस प्लॉट, ठीक है, डिस्टेंस प्लॉट। और यहाँ लिख दूँ मेरा प्रेडिक्शन वैल्यूज क्या है, ये REG_thread, कॉमा y_test। और ये दोनों का प्रेडिक्शन अगर मैं बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके देख लूँ,
सब्ट्रैक्ट करके, देखिए मैं यहाँ कंपेयर कैसे कर रहा हूँ क्योंकि ये रिग्रेशन स्टेटमेंट है। अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करता हूँ और मैं अगर देखता हूँ कुछ ऐसे आ रहा है मेरा, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर यूज करता हूँ, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ केडी डिस प्लॉट में एक अच्छा सा पैरामीटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं केडीई, आई गेस वो हुई हो गया, काइंड हो गया, काइंड में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं केडीई प्लॉट, काइंड इज इक्वल टू केडी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काइंड इज इक्वल टू केडीई। तो आप यहाँ देखिएगा guys, ऐसे टाइप का ग्राफ क्रिएट होता है, ठीक है, ऐसे टाइप का ग्राफ क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है अपना बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड द टेस्ट, इट इज गुड। इसका वेरिएंस बहुत कम है, +10 और -10 के बीच में ही है सब, बहुत सारे पॉइंट्स, और रिमेनिंग जो आउटलायर्स है उसका डिफरेंस हाई है, ठीक है। बट इन बाकी का डिफरेंस बिटवीन -10 टू +10 है। तो इससे हमको ये एक अजम्पशन मिलता है कि हाँ भाई मेरा डेटा अच्छा है, ठीक है। अब एक और चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं कि जब हम लोग ये चीज प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए जो एक्स्ट्रा क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग स्टैंडर्डाइज करके बेसिकली किया हुआ है, राइट। अगर इसको इन्वर्स भी करके देखेंगे तो आपका ये वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे वेरिएंस बहुत ही कम है, -10 टू +10, तो ये काफी अच्छी चीज है, अच्छी बात है। इसका मतलब मेरा मॉडल ने अच्छे से प्रेडिक्शन किया है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप sklearn.metrics भी यूज करके इंपोर्ट आर स्क्वायर को ये ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर देखते हैं, R2 स्कोर, ठीक है, R2 स्कोर को आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं स्कोर लिख देता हूँ, R2 स्कोर को मैं फॉल कर देता हूँ और ये मेरा वैल्यू प्रेडिक्शन और मेरा RG कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट। तो अगर मैं ये दोनों का भी देखूं और स्कोर का वैल्यू देखूं तो ये से मेरा एडजस्टेड R2 स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। एडजस्टेड R स्क्वायर के लिए कोई ऐसा डिफॉल्ट फंक्शन नहीं है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने थ्योरेटिकल में बताया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया पूरा एंड टू एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, और मैंने यहाँ कैसे क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करके बेसिकली मेरे को ये स्पेसिफिक थिंग मिल गया, ये सेम रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करके, ठीक है। और हमेशा याद रखिए आपको फिट करना पड़ेगा। मैं एक और टेक्निक आपको बताऊंगा इन द लेटर स्टेजेस कि हम लोग इसको ग्रिड सर्च सीवी से भी कैसे कर सकते हैं। ग्रिड सर्च सीवी के साथ भी हम लोग अलग अलग पैरामीटर के साथ लेके कर सकते हैं, वो आगे वाले एल्गोरिथम में अप्लाई करूंगा, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में बहुत कम ही पैरामीटर्स होते हैं जिसे आप हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं ऑलमोस्ट, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी देख चुके हैं। तो इसलिए मैंने फिट और ये किया। तो पहला स्टेप आपने डेटा सेट लिया, क्लीनिंग मीनिंग लीजिए, सब करिए, स्टैंडर्डाइज करिए डेटा सेट को और इसका डिफरेंस बताइए, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म क्यों यूज हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया, उसके बाद क्रॉस वैल स्कोर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन किया, फाइनली उनको ये वाला आउटपुट मिला। मिला, इसका डिफरेंस काफी कम था, माइनस कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे को 66% मिल रहा है। और ऑब्वियसली लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो इसका एरर रेट थोड़ा हाई होता है, बट हम आगे जब देखेंगे अलग अलग टेक्निक्स ये है।
The goal of machine learning is to build a model that performs well on new data. If you have new data, you can see how well your model performs on it. The problem is that you may not have new data, but you can simulate this experience with scikit-learn's train test split. In this video, I'll show you how train test split works. The first thing that you need to know is what is train test split. Here's how they proceed. The first step is to split your data into two pieces, a training set and a testing set. Typically, about 75% of the data goes to your training set, and about 25% of your data goes to the test set. The second step of the process is to train the model on the training set. The final step is to test the model on the testing set and evaluate the performance. First step to import libraries. The next step is set. The dataset used in this notebook is the Boston house price dataset. The goal of this dataset is to predict house prices based on features like number of rooms. The next step is to create a features matrix as well as a target vector. From here, you can create a train test split. The X test, Y train, and Y test the data from the data frame df12 for a particular train test split. Notice that roughly 75% of the data went to the training set and roughly 25% went to the test set. From here, you can utilize a machine learning model. In this case, it's linear regression. The final part is to measure model performance. By measuring model performance on the test set, you can estimate how well your model is likely to perform on new data. To do this, you can use a score method. Just make sure that your inputs are your test set. So that's it. Train test split helps you simulate how well a model would perform on new data. Machine learning, it's incredibly powerful. And as a data scientist, you'll use it all the time. But you know what they say, with great power comes great responsibility. With all the open source Python packages out there, it's really easy to train a machine learning model. But it's also really easy to mess things up before you really get started. As a data scientist, I'm surprised how often I come across projects that are set up for failure just because they haven't set up cross-validation correctly. And that's why in today's video, we're going to be talking all about cross-validation and how important it is. And trust me as I say this, as someone who's trained thousands of machine learning models, competed in Kaggle competitions, and created machine learning models in production in major companies, cross-validation is extremely important. I'd even go as far as to say that cross-validation is even more important than the model that you use itself. Hi, my name is Rob. I'm a data scientist and I make videos about coding in Python and machine learning. Today's video, we're going to be talking all about cross-validation. We're going to show an example that explains exactly why cross-validation is needed. Then we're going to walk through a few of the different cross-validation techniques that are used and when to use them. And finally, we're going to apply the correct cross-validation to the first model that we showed and show how we can actually evaluate it in a proper manner. If you enjoy this video, please consider liking and subscribing. You can also check me out on Twitch where I stream. All right, let's get into it. All right, so here we are in a Kaggle notebook. Now, the nice thing about this notebook is I'll link it in the description below, and you'll be able to click that link and come into the same data set and go through the code later if you want to. So before we get too far here, I want to show you I've added a data called the stroke prediction data set. We're going to be using this as an example for showing why cross-validation is important. And basically, this is our plan for this video. We're going to show an example where cross-validation is important, step through all the different cross-validation techniques which I commonly use, and then run our example with proper cross-validation to show how that actually works in practice. We're going to do a handful of imports here. So these imports, we import pandas, import numpy, import matplotlib. Now for our model, we're going to import light GBM. And you don't need to know that much about that model other than the fact that it's a machine learning model. And without proper cross-validation, we're going to see that it'll overfit.
This course is a practical and hands-on introduction to machine learning with Python and Scikit-learn for beginners. It is designed and taught by Akash N.S., who is the CEO and co-founder of Jovian. You'll learn about a bunch of common machine learning models and different types of machine learning. By the end of this course, you'll be able to confidently build, train, and deploy machine learning models in the real world. The topic for today is linear regression with scikit-learn. This is the first topic we're covering in machine learning with Python. And in fact, one of the things we'll try and do today is to apply linear regression to a real-world problem, and we'll try to predict medical expenses using this technique. So here's an overview of what we're going to cover today, just a quick outline. So first, we'll start by stating a typical problem statement for machine learning. Then we'll download and explore a dataset. Then we will perform linear regression with one variable using scikit-learn. Then we'll perform linear regression with multiple variables. And don't worry if these terms don't make sense right now. They will by the end of this session. Then we'll use categorical features for machine learning. Learn how to apply that in general, not just for linear regression. We will also talk about regression coefficients and feature importance. How do you interpret the outputs of a model that you create? And then we will apply linear regression to some other datasets. This tutorial is an executable Jupyter Notebook hosted on Jovian, and you can run this online on Binder, or you can run this on your computer as well. You can also run this on Google Colab, and that's perfectly fine too. So here's the problem that we will solve today. And using this problem, we will define the terms machine learning and linear regression in the context of this problem, and then later we'll generalize their definitions. Let's read the problem carefully, and then we'll think about how we can approach this problem. Acme Insurance Incorporated offers affordable health insurance to thousands of customers all over the United States. And as the lead data scientist at Acme, you are tasked with creating an automated system to estimate the annual medical expenditure for new customers, using information such as their age, sex, BMI, children, smoking habits, region of residence, etc. Why are you asked to do that? Because estimates from your system will be used to determine the annual insurance premium, which is the amount paid every month or every year, that is offered to the customer. So your job is to figure out when a new customer applies for medical insurance, like their age, sex, BMI, etc., how much they might incur in medical bills in an average year. If you can find that information along with some other information can be used to determine what you should charge the customer for insurance. This is a typical problem that you'll face, and it's a typical example of a machine learning problem where you want to replace some manual decision making or one piece of a manual decision making process with some automation. So in this case, for example, you may need an expert who has seen customers for several decades to figure out based on this information what their medical information might look like. Or if you're a data scientist, you can figure that out using data, and that's what we're going to create today. You need some data to actually figure this information out, but fortunately, because Acme Insurance already has thousands of customers, they have given you a CSV file. So here's a CSV file that your manager or whoever is working on this project has given you. And this CSV file contains historical data, let's say from the past year, for over 1,300 customers. You can see here we have information like age, sex, BMI, the body mass. I'll be back in 2 seconds. Number of children, whether this person is a smoker or not, which region of the country they belong to, and the actual medical charges they incurred in the previous year. All right. So we have some historical data, and we would want recent historical data, not going too far behind, because medical charges can change due to inflation and due to other reasons as well. So that's the data you have. And your job is to create some kind of a system which can take this information, age, sex, BMI, children, smoker region, for a new customer and estimate what their charges are going to be over the coming year. Here's a source for this dataset. This is a popular dataset that is used in machine learning. Now, before we proceed further, just take a moment to think about how you can approach this problem. Let's begin by downloading the data. So we will download the data using the URL retrieve function from urllib.request. This is a simple function that's already present in the Python standard library urllib. So let's get the URL into a variable called medical charges URL. And let's import from urllib.request, the URL retrieve function. And let's call URL retrieve with the medical charges URL. And let's download the data to this file, medical.csv. Okay, so now we have a file, medical.csv, which should have the required data. Next is to create a pandas data frame using the downloaded file to view and analyze the data. So let's install the pandas library using pip, and then we import pandas using the alias pd. And then we call pd.readcsv and give it the name of the CSV file. And here we have the data frame. So the first step is to get the data into your Jupyter Notebook, no matter what kind of problem you're working on. And one way to get the data is by downloading it using urllib. The other way to do it is you can go file, open,
And then you can click the upload button here. You can click the upload button here and upload the file from your computer. We've also looked at other ways to download datasets, for example, from Kaggle, and we will apply all of these different techniques at different points in this course. So here's the data, and this data contains 1,338 rows and 7 columns. Each row of the dataset contains information about exactly one customer. Our objective is to find a way to estimate the value in the charges column using the values in the other columns. Now, if we can do so for historical data, then we should be able to estimate the charges for new customers too, simply by asking for their information like age, sex, BMI, etc., maybe in an application form. Okay. So let's first check the data type for each column. We go medical.info, and we have 7 columns. Age, and age seems to be an integer. Sex seems to be a string, as you can see here, male and female. So actually, it's more of a categorical column, but let's just call it a string for now. BMI seems to be a floating point number, and you can see here in BMI we can have these decimals. Age can also have decimals, but it looks like we've only collected the integer portion of the age, so that's what we're working with. Then we have children. This is the number of children the customer has, and this is again an integer, and typically this would be a number like 0, 1, 2, 3. Then we have smoker, whether the person smokes or not, and this has a yes/no answer, so this was probably a tick box somewhere in a form. So this is also a categorical column, which we have in the form of a string right now. Then we have a region. So it seems like there are different regions customers can belong to, like southwest, southeast, northwest, northeast. Seems like there are 4 of them, but we have to check. And finally, we have the actual annual medical charges incurred by the customer. So there are numeric columns, and then there are categorical or string columns, and among the numeric, there are integers and floating point numbers as well. Now, one good thing here is that there are no null entries. If you see here, non-null count, that is 1338, which is also the total number of entries. So that means that there are no empty values in any columns. So none of the columns contain any missing values, and that already saves us a fair bit of work. But don't worry, we will deal with missing values in future lessons. Next, let us look at some statistics for the numerical columns. So if we call medical df.describe, that is going to give us information like the count, mean, standard deviation, minimum, and all the percentiles, like 25 percentile, 50 percentile, which is the median, 75 percentile, and the maximum. And this is always a good thing to do at the very beginning, just to see if the range of data makes sense. And I would say that the data makes sense. Seems like the average age is around 40, seems like the standard deviation is 15, minimum is 18, maximum is 64. Okay, we already know that 18 is the minimum age, 64 is the maximum age. They both seem reasonable, but this also tells us that perhaps the insurance company does not take applications below the age of 18 or above the age of 64. Then we have the BMI. Seems like the minimum is 15. So the BMI, just to give you a sense, is the mass of a person in kilograms divided by the square to the square of a person's height in meters. So BMI, this is in the units. The minimum is around 15.96 or 16, and the maximum is around 53. Okay. Then we have the number of children that goes to a minimum of 5. Then we have the actual medical charges, which go from a minimum of 1121, so just $1,000. This person basically did not go to the hospital at all during the year, to a maximum of $64,000. So you can see that there is a huge variation in the charges from 1,000 to 64,000. Not only that, you can also see that if you check the 50% mark, 50% of people have their medical charges under $10,000, or even under $16,000. So that means there is a huge skew, or there are several outliers in the charges column, and we'll see that in more detail once we study the visualizations. But even just by looking at these numbers, you can tell some of these things. The mean is 13,000, but the 50% mark is 9,000, so there's a bit of a skew in the data. Just look at the data, just look at all these statistics, and try and draw whatever inferences you can. In this case, once again, there don't seem to be any incorrect values like negative ages or ages greater than 200, let's say, or any negative values. Everything seems nice and clean. So somebody has put together this data set for us, made sure that it is pristine, all the data is valid, and there is no missing data. That makes our job a lot easier. So that was downloading the data. So let me just save my project at this point. I'm just going to import the Jovian library and click jovian.commit. Make sure you're saving your notebook from time to time. So now we've downloaded the data. So let's start by doing what we know. Let's start by just doing some exploratory analysis and visualization, and let's see where that can take us. We will visualize the distributions of values in some of the columns, and we will also find the relationships between the charges columns and the other columns, because we have to use the other columns to predict charges. And we will use the libraries matplotlib, seaborn, and plotly for visualization. Plotly specifically because it will give us some interactive charts and save us some coding, but all of these plots can be done using just matplotlib and seaborn as well. And I've linked to some tutorials here that you can check out in case you want to refresh or learn one of these libraries. So I'm going to install these libraries first using pip. All right, and then I'm going to import these libraries. So I'm going to import plotly.express, which is a high-level API that makes it really easy to create plotly interactive charts. Then I'm going to import matplotlib, and I'm going to import matplotlib.pyplot as PLT. This is how typically matplotlib is imported. And finally, I'm going to import seaborn as SN. All the conventional ways in which these libraries are imported. One last thing we have is matplotlib inline. The purpose of this line is to ensure that any charts that you create, they show up as outputs within your Jupyter notebook and not as pop-ups, because when you close a pop-up, the chart goes away. All right, so now we have imported the libraries. One other thing I'm going to do is just change some settings, which will improve the default style and the font sizes for our charts. We're just going to make the font sizes a bit larger and use the dark grid style. This will only apply to matplotlib and seaborn, not to plotly. Okay, let's begin with the first column, age. And age is a numeric column. The minimum age in the dataset is 18, and the maximum age in the dataset is 64. So we can visualize the distribution of age using a histogram, essentially trying to find out how many customers we have for every age from 18 to 64. So that means we need 64 minus 18 plus 1, or 47 bins, one for each year.
And that way we'll be able to visualize it using a histogram. Another useful plot is a box plot. A box plot is also quite useful because it tells you the minimum, the maximum, the median, and all the quartiles. So that can give you a sense of the distribution of. And using Plotly, we can actually create both of these charts with just one line of code. We say px.histogram, pass in the df data frame, and then we specify that we just want to use the age on the x-axis, and we want to use 47 bins, and we want to give the chart a title, distribution of age. Now, by adding this marginal equals box parameter, Plotly will also plot a box plot the histogram for us. So here's what the distribution of age looks like. You can see here, at the age of 18, we have 69 customers. At the age of 19, we have 68. Then we have anywhere from 20 to 30 customers at every age. Seems like a lot of people here in the range of 40 to 50. And then here we have the highest age, which is 64, and nobody beyond the age of 64. It's a nice uniform distribution almost. If you just ignore these two values, you can see that the midpoint is around 39. And the quartiles are also equally balanced on each side. So the distribution of ages in the dataset is almost, except for the ages of 18 and 19, which seem to have over twice as many customers compared to other ages. Now, to explain this piece, the uniform distribution might simply arise from the fact that there is not a big variation in the number of people at any given age between 18 and 64 in the United States. For example, if you open up this other chart that's available online, this tells you the population in different age ranges. So you can see here 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29. So it seems like and it's split across male and female, but the overall population you can clearly see across different age groups is fairly similar. And you can assume that there is a certain percentage of people, or certain percentage of population that takes their insurance from Acme Insurance Incorporated. So that's why you see this kind of a distribution which reflects the overall population. This is always something that you should check whenever you have a data set. Does the data you have reflect the distribution of the overall population or not? But in this case, in one case, it does not. And I will let you figure out why this might be the case. Can you explain why there are over twice as many customers with the ages 18 and 19 compared to other ages? If I had to guess, I would probably guess that maybe Acme Insurance is offering a lower insurance premium if you sign up before the age of 20. That could be one reason. And also because maybe 18 is the legal age for you to be able to get insurance, at least from this company. So a lot of people, as soon as they turn 18, get the insurance. That could be one of the other reasons. But neither of these, we can assume. We would have to then go and verify if this is indeed the case. Maybe even look at some industry averages if you can find some reports online. Okay, so that was the distribution of age. It was mostly uniform with a couple of years where we had twice as many people. Next, let's look at the distribution of body mass index. Once again, we're going to create a histogram of the body mass index. And this time we're going to use the red color, and we're going to have a box plot once again. So here is the distribution of the body mass index. And this looks very different. It seems like it is distributed according to a Gaussian distribution, or what is also called a normal distribution. Here's what a normal distribution looks like. So if you have a certain population of data, yeah, this is the one. So if you have a certain population of data where most of the values are centered around a single value, what is called the mean, and then you have a decreasing probability as you go away from that mean, that's called normal or Gaussian distribution. Right? And this is exactly what is visible here. Why is this Gaussian and why is the previous one normal? I'll let you think about that. But what we can notice here with BMI is that most people have a BMI or a body mass index around 30, maybe in the range of 25 to 35. And then as you get further away, fewer people seem to have that BMI. So 25 to 35, roughly speaking, might represent the average human in terms of the ratio of weight to height. And here's how you can interpret body mass index values. Or this is how they're typically interpreted. Less than 18.5 is considered underweight, and then 18.5 to 24.9 is considered normal. To overweight is, well, 25 to 29.9 is considered overweight slightly.
More than 30 to 39 is considered obese, and greater than 40 is considered morbid obesity. Now, this is an important factor from the health perspective. Typically, people are expected to be in the normal to overweight. If they're underweight, then they are more susceptible to certain diseases, and if they are obese or even morbidly obese, then they are more susceptible to certain illnesses as well. And this is why this is one important piece of information that is requested in your insurance form. So as we perform this analysis, as you see with age, you can see with age that there may be a certain relationship between age and medical charges, and you can try and get that relationship might be. And then there may be a certain relationship between BMI and medical charges as well. With BMI, I'm guessing somewhere in between might be lower medical charges if you're to either extreme. Maybe you will have higher medical charges. Now let's look at the most important column, the distribution of charges. And before I look at do you want to take a guess on what the distribution of charges is going to look like? Just think about it. We've already seen the description. We've already seen the statistics for it. So here we are creating a histogram once again, px.histogram, and we have a medical data frame, the data frame. On the x-axis, we want to show charges, and we also want to show box plot above the histogram. And then we want to set the title to annual medical charges. But we have another important section here. So what we're doing is we want to split the histogram of charges for smoker versus non-smoker. Split the data. And here's what that gives us. Green represents people who have responded yes to smoker, and gray represents people who have not responded yes to smoker. So you can see here that people who are not smokers seem to have lower annual medical charges. In fact, most people in general overall seem to fall in the maybe like 5,000, what is this, $2,000 to $15,000 expense category. So most people are spending between $2,000 to $15,000, not more than that, which is not a very high expense. And then there are some people who need to spend a lot every year. And there is a stark difference between people who smoke and people who do not. It seems like 50%, the median for non-smokers is 7,300, and the median for smokers seems to be 34,000. Now, it's not entirely clear if this is because they are smokers, if it is just generally true that you have a higher medical if you smoke regularly, or is it that more people who smoke are taking life insurance, and maybe fewer people who do not smoke are taking life insurance. So this means all we know is that people who responded yes to smoker seem to have a higher median medical expense. But in general, you can see that this follows the exponential distribution, or more appropriately, this is called the power law. So in the power law, what happens is you have a lot of people along the smaller numbers, you have a lot of people who have a very low expense, and then you can see this exponential decrease in the medical charges. And if you were to separate out smokers and non-smokers and plot them separately, so you would see that for non-smokers you have this exponential decay, and maybe for smokers you have that as well. But it seems like there are two sections. Maybe this is just general smokers, and this is maybe smokers with some ailments, right? So there is to discover here why we are seeing this kind of a pattern. Maybe do we need another category of like light smokers and heavy smokers? We might need to look into this. But at the very least, we're already starting to observe some trends that the charges have, that for most customers, the annual medical charges are under $10,000, $14,000, and only a small fraction of customers have higher medical expenses, possibly due to accidents, major illnesses, or genetic diseases. And this is what happens. Most of the population is healthy. Most of the population probably does not need to go to a hospital every year, maybe except for a few checkups, regular checkups. But some people, unfortunately, either have accidents or major illnesses or genetic diseases, right? So that's why they may incur a higher medical expense. And the second is that there is a significant difference in medical expenses between smokers and non-smokers. While the median for non-smokers is 7,300, the median for smokers is close to 35,000. Okay, so next up, here's an exercise for you. Visualize the distribution of medical charges in connection with some other factors like sex and region. So maybe replace this by sex and replace this by region, and see if you see a similar disparity across males and females or across different regions. Okay, so while we're talking about the smoker column, let's try and visualize the distribution there. So let's just see how many examples we have for each. So it seems like out of the 1,300 or so people we have, 1,000 or so have responded no for smoker, and around 274 have responded yes. So about 20% of the customers are smokers. And we can visualize this using a histogram as well. So we say px.histogram, we pass in the data frame. For x, on the x column, we have smoker. And let's break down the visualization by sex this time. So here you can see that yes represents people who responded yes to smoker, and that number seems to be in total about 268 or so. And no represents people who responded no. But this is also broken down by sex. So you can see that about 115 females said yes and 159 males. On the other hand, 517 males said no and 547 females. So it seems that smoking is more common among males, and this is something Wi-Fi.
This is something that you should try and verify. And similarly, it also seems like 20% of the customers have reported that they smoke. So this is also, again, something that you should try and verify, see if this matches with the national average. And you can assume that the data was collected in 2010. This data set has been around for about 10 years. Now, the reason you should verify these things as you're performing this analysis, and the reason you should perform this analysis in the first place, is to understand data that you have matches the distribution of the population itself, right? If your data contains 90% smokers, but in the general population there are only about 10% smokers, then any analysis that you do or any model that you build will be wrong, because it will be built under the assumption that 90% of the inputs that are coming to the model are going to have yes in smokers. So that's why whenever you're building a model, make sure that the distributions of each column match the distributions of the populations where the model will be applied. So with that, we've looked at the individual columns. You can also try with your observations. Okay. So now, having looked at some individual columns, we can now visualize the relationship between charges, which is the value that we wish to predict, and the other columns. I would guess that age would be one of the most important factors in determining your medical expenses. So let's visualize the relationship between age and charges using a scatter plot. So we use px.scatter, we pass in the data frame medical df. We pass in the data frame medical df, and on the x-axis we want to show the age, on the y-axis we want to show the charges, and we will show a single point on the chart for each customer. Now, whenever you have a scatter plot, you should also use the opportunity to maybe add some color. So maybe let's color the points based on whether the person is smoker or not. And let us just set the opacity of points to 0.8, because we have over 1,000 customers, so we may have some overlapping points. So just so that see the data, let's just reduce the opacity a little bit of points. And finally, we're just setting a title as well. And this looks very interesting. I can see 3 clear clusters here. Here's what this is what we get. So it seems like among non-smokers, most people incur a fairly low medical expense that goes from 0 to 5,000 at age and goes up to 13 to 15,000 at age 64. But then there are some, as we said, there are maybe 5-10% of people who, unfortunately, due to accidents, genetic ailments, or just major illnesses, have to spend a lot more. And then there's probably a similar trend here for smokers. You can see here, this seems to be the baseline. So probably if you're just smoking, you don't have any other ailments, this is where you are. And then here you have another group of people. So it's possible that these are people who are smokers and have ailments, or as there was one suggestion, maybe it is a combination of being a smoker and also being obese. So it's possible that could be the reason for this. So it's worth investigating. But you can see here clear sections. Maybe you need a smoker and a heavy smoker section. Maybe that makes a big difference. Maybe 2 cigarettes a day doesn't make a difference, but 20 does. So all the resting tends here. And that's what we've summarized here. And this is a general thing that you should do in your exploratory analysis. Whenever you observe a trend, summarize it and try to offer some explanation. And you can mention clearly that there are certain hypotheses, like we're using the terms like it's possible, which means that this is something to be verified, and then presumably, which outside the norm. So फेज है, ये वार्म अप फेज है, यानी कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये एक प्री रिक्विजिट लेक्चर है, यानी कि अगर आपको बेसिक मैथ्स भी बिल्कुल नहीं आती है कि भैया मीन मीडियन मोड वगैरह क्या होता है, वैसे अगर मशीन लर्निंग सीख रहे हो, बट एकदम एडवांस लेवल की मैथ्स आपको पहले से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटा सा फेज होने वाला है, यहाँ पे अपन बेसिक से सुनने ला है। अब ये 3 क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको मीन मीडियन मोड जो समझना पड़ेगा। मशीन लर्निंग में इसका यूज कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। मशीन लर्निंग में हम जो है सबसे पहले डेटा को समराइज करते हैं बिफोर उसका हम यूज करें। तो बेसिकली ये 3 चीजें जो है आपको वहां पे इस्तेमाल करनी। जब आपको डेटा सेट का बैलेंस x प्लस b, तो ये y जो वैल्यू होगी हमारी, ये हमारी फाइनल सैलरी होगी जो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली होती क्या मशीन लर्निंग की भाषा में इसको बोलते क्या है, बेसिकली आउटपुट, या फिर आप इसको एज अ रिजल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में x की जो वैल्यू होगी, यानी कि डेज वर्क, कितने दिन काम किया, यानी कि ये बाय टोटल प्रिडिक्टिव पॉजिटिव्स, ठीक है। उसके बाद में एक और यूज करेंगे विच इज रिकॉल, ये भी एक टर्म है। तो बेसिकली ट्रू पॉजिटिव्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल एक्चुअल पॉजिटिव से, ठीक है। अभी एक्चुअल प्रेडिक्ट के बाद समझ गए होंगे जो मैंने आपको लास्ट बताया था। तो परसेंटेज मतलब कि आउट ऑफ 100 कितना हुआ, ठीक है, यानी कि हाउ मच हैपेंड, कितना हुआ। उसके बाद में आता है रेशो। रेशो मतलब कि 2 नंबर्स के बीच का कंपैरिजन। जैसे मान लेते हैं ए बी, ठीक है, या फिर ए को आप बी से डिवाइड कर दो लाइक दिस। तो फॉर्मूला क्या हो गया परसेंटेज का, पी इक्वल टू जो भी पार्ट होगा जितना हुआ डिवाइड बाय होल, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया, पार्ट डिवाइड बाय होल। सिंपल सा जो है, आई एम डैम श्योर आपने 8 या 9 में पढ़ा होगा। एक सिंपल एक्यूरेसी और प्रिसिजन रिकॉल का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लेते हैं कि एक स्पैम डिटेक्टर आपने बनाया जिसमें 100 ईमेल आए, 100 ईमेल उसने चेक करा, टोटल ईमेल कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। उसमें से करेक्ट उसने जो सही स्पैम मार्क करा वो थे सिर्फ 90, बाकी गलत मार्क करा उसने 10, ठीक है। मतलब कि 90 उसने सही प्रेडिक्ट करा कि हाँ भाई सच में स्पैम है, और बाकी 10 उसने जो है गलत करा। तो एक्यूरेसी कैसी निकलेगी, एक्यूरेसी इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे 90 डिवाइड 100 इंटू 100, तो ये कितना निकल के आ गया 90%। इसका मतलब कि मॉडल 90% सही होगा जिस टाइम पे चेकिंग होगी। सिमिलरली आपको प्रिसाइजन और रिकॉल निकालना है। अब मान लेते हैं कि भैया मॉडल भैया इंप्रेसिव साउंड करता है, तो हमेशा चेक कीजिए परसेंटेज परफॉर्मेंस, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग जहां पे हम समझेंगे अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। अब ये फाउंडेशन है लीनियर रिग्रेशन की, यानी कि जो पहला मॉडल बहुत लोग बनाते हैं और जो कि आप भी बनाओगे, बेसिक अलजेब्रा, यानी कि इक्वेशंस विद वेरिएबल्स को सॉल्व करना। ना आप भी बोलोगे कि सागर भाई मजा आ गया, मतलब
मजा है कि कोई समझा दे यार, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन जो है बस आपको अपने दिमाग में रखनी है, विच इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये फाउंडेशन होती है लीनियर प्रेडिक्शन की। अब इसका भी अपन क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं algebra.txt के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप एक कंपनी में एचआर हो। अब हर एक एम्प्लॉय एक दिन काम करता है तो आप उसको 500 रुपये डेली क्या करते हो, उसकी डेली इनकम देते हो कि भाई एक दिन काम करोगे तो 500 रुपये मिलेगा। ठीक है, पर डे। और 1000 रुपये जो है आपका ज्वाइनिंग बोनस हो गया कि भाई आपने ज्वाइन किया उसके लिए आपको बोनस मिल जाएगा। अब ये जो ज्वाइनिंग बोनस है ये फिक्स्ड है फॉर एवरीवन, सभी के लिए फिक्स्ड है। ठीक है, तो 500 रुपये आपका डेली वर्किंग हो गया, 1000 रुपये ज्वाइनिंग बोनस हो गया। अब 0 डे पे आपको सिर्फ 1000 रुपये की कमाई होगी जो कि ज्वाइनिंग बोनस होगा। पहले दिन पे आपकी कमाई होगी 1500 क्योंकि 500 रुपये पर डे आपको मिल रहा है। दूसरे दिन पे कमाई हो जाएगी 2000, तीसरे दिन पे यही कमाई हो जाएगी आपकी 2500। ठीक है, आपने एक पैटर्न देखा, राइट? डे 0 1000, डे 1 1500, डे 2 2000, डे 3 2500। अब इसी को अपन इस इक्वेशन में रख के मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वाई सिंबल की बात करूँ, वाई सिंबल मतलब कि फाइनल सैलरी होगी हमारी। ठीक है, इक्वेशन लिख देता हूं, डोंट वरी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो ये y जो वैल्यू होगी हमारी, ये हमारी फाइनल सैलरी होगी जो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली होती क्या मशीन लर्निंग की भाषा में इसको बोलते क्या है, बेसिकली आउटपुट, या फिर आप इसको एज अ रिजल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में x की जो वैल्यू होगी यानी कि डेज वर्क, कितने दिन काम किया, यानी कि ये इनपुट हम उसको देंगे जो हमें पता है। उसके बाद में आता है m की वैल्यू यानी कि 500 रुपये पर डे आपको मिलेगा, राइट? यानी कि रेट ऑफ चेंज पर यूनिट ऑफ x की, भाई ये चेंज भी हो सकता है, भाई हो सकता है किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम मिले, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज। उसके बाद में आता है बी, बी यानी कि 1000 रुपये बोनस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बी मतलब बोनस से प्रेफर मत करना, इट इज अ फॉर्मूला, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा यहाँ पे जब x 0 था वो था हमारा 1000, राइट? तो x इक्वल टू जब 0 था तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 1000 रुपीज़ था ना, विच इज अ बोनस। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारा, y इक्वल टू 500 इंटू एक्स प्लस 1000। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई कोई 4 दिन काम करा तो उसका प्रेडिक्टेड सैलरी निकल के क्या आएगा, 500 इंटू 4 प्लस 1000, तो विच इज हो जाएगा 4 इंटू 5 2000 प्लस 1 ये 3000, मतलब 3000 रुपये भाई आपकी प्रेडिक्टेड सैलरी यहाँ पे निकल के आई। तो यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, फिर आपको ये भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इज समथिंग जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट। उसके बाद में आता है m यानी कि स्लोप। ठीक है, यहाँ पे लिखते चलता हूँ मैं, m इक्वल टू यानी कि स्लोप, कितना इफेक्ट पड़ रहा है x का y के ऊपर। जैसे मान लेते हैं 500 रुपये पर डे का इफेक्ट पड़ रहा है, राइट, हर एक कैंडिडेट के ऊपर। देन b यानी कि इंटरसेप्ट, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी जब कुछ भी काम नहीं हुआ है, जैसे कि ज्वाइनिंग बोनस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फिर आता है y, ठीक है, y मतलब कि आउटपुट जो हमें एक्चुअली प्रेडिक्ट करना है, फाइनल प्रेडिक्शन जो आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे आप देखो कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, तो नंबर ऑफ डेज भी यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, 6 8 10। तो अगर 0 डे पे कोई है, जैसे मैं इसको थोड़ा डार्कर कलर पे लेता हूँ, 0 डे पे कोई है तो उसकी अर्निंग होगी 1000, सेकंड डे पे अगर कोई है तो 2000 होगी, फोर्थ डे पे है तो 3000, सिक्स्थ डे पे है तो 4000, एट्थ डे पे है तो भाई 5000। इस तरीके से जो भैया ये लीनियर अलजेब्रा आपका काम करता है। अब इसके लिए भी मैंने आपको क्या करा है, एक असाइनमेंट दिया है, बेसिकली सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड कमेंट करके बताने कि भैया ये रहे मेरे क्वेश्चंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ये प्लॉटिंग x वर्सेस y। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लॉटिंग x वर्सेस y। अब हम आपका एक्चुअल में डेटा देखेंगे, उसका ट्रेंड चेक करेंगे, ये समझेंगे कि मॉडल कैसे काम कर रहा है। अगेन एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ मैं आपको। ड्रॉ कर लेते हैं आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, आवर्स ऑफ स्टडी और एग्जाम मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है तो उसके मार्क्स आते हैं 40, अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स आते हैं 50, अगर कोई 3 घंटे पढ़ता है तो 65 मार्क्स आते हैं, कोई 4 घंटे पढ़ता है तो 75, कोई 5 घंटे पढ़ता है तो 90 मार्क्स आते हैं। वेरी सिंपल। अब आपको ये जानना है कि क्या कोई क्लियर कनेक्शन है कि भाई अगर कोई इतने घंटे और स्टडी कर रहा है तो उसके उतने ही मार्क्स आएंगे, क्या यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रही है क्या, या फिर ज़्यादा स्टडी करने से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्या ये बात सच है? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे x और y का, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ये लेके रखा है, ठीक है, बिटवीन आवर स्टडीड एंड एग्जाम मार्क्स। थोड़ा सा इसको ब्लैक नहीं ये कलर में करके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली x एक्सिस मतलब कि आपका, यहाँ पे लिखते चलता हूँ, x मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इनपुट, ये आपका जाएगा इनपुट, और y मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आउटपुट जो हमने मार्क्स स्कोर करा है, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स वगैरह प्लॉट करते हैं। जैसे कि अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो एक अपवर्ड लाइन यहाँ पे रेड कलर की जा रही है, x x x, ये जो मैंने यहाँ पे x करके ड्रॉ करा है ये, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है, क्या है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर ये डाउनवर्ड जाती वाली लाइन तो हम क्या बोलते हैं, ये एक नेगेटिव ट्रेंड है। और अगर ये नंबर्स स्कैटर्ड होते, अलग अलग रैंडमली स्कैटर्ड होते, इसका मतलब कोई भी रिलेशन दोनों के बीच में नहीं है। तो हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, देखो सबसे पहला बिफोर ट्रेनिंग का मॉडल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कोई पैटर्न है भी या नहीं। आप इसको ऐसे समझो कि आप एक टीचर हो, आपने पेन पेपर में लिखा कि भाई ये 1 घंटा पढ़ा तो 40, 2 घंटे पढ़ा तो 50, 3 घंटे पढ़ा तो 60, 4 घंटे पढ़ा तो 65, ठीक है, ये 4 वैल्यूज आपने लिखी। अब आप अपने आपसे पूछो कि क्या कोई पैटर्न है इसके अंदर कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आ गए। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग नंबर्स आप क्या करो, एक ग्राफ बना लो विद पॉइंट्स, जैसे कि 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, 2.5 आवर, और फिर ये आपका क्या हो गया स्कोर। तो भाई अगर कोई 2 घंटे पढ़ रहा है तो 50 आ रहा है, अगर कोई 2.5 घंटे पढ़ रहा है तो कुछ और आ रहा है, 3 घंटे पढ़ रहा है तो कुछ और आ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है तो कुछ और आ रहा है, राइट। तो सडनली आप देखोगे कि डॉट्स जो है वो अपवार्ड की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यस, ज़्यादा पढ़ना मतलब ज़्यादा मार्क्स, और इससे आपको ये डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि हाँ जी एक मॉडल यहाँ पे बनाया जा सकता है। अगर कोई पैटर्न फाउंड नहीं हो रहा है, मतलब कि डेटा जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड है रैंडमली, तो मे बी वो मॉडल आपको नहीं बनाना चाहिए। एंड दूसरा, जब एक मॉडल बन जाए तो ये चेक करने के लिए कि मॉडल ने कितने अच्छे तरीके से जो है सीखा है, यानी कि आपका मॉडल ये कह रहा है कि भाई अगर आप मुझे कितने घंटे पढ़ाई एक बच्चे ने बताते हो तो मैं आपको एक्चुअल जो है बता दूंगा कि क्या स्कोर वो कर सकता है। जैसे कि अगर कोई 2 घंटे पढ़ा है तो वो 50
कोई 4 घंटे पढ़ा है तो वो 68 बता देगा, अगर कोई 5 घंटे पढ़ा है तो जैसे मान लेते वो 80 बता देगा। तो अब क्या करना है, आपको सेम ग्राफ के ऊपर एक और लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे जहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉट्स थे, ठीक है। अब आप देखोगे कि क्या ये डॉट्स एक दूसरे के क्लोजेस्ट हैं, ठीक है। अगर वो अलग अलग है मतलब कि भाई आपका मॉडल जो अच्छे से नहीं सीख पाया, तो इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका मॉडल काम कैसे कर रहा है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टॉपिक, ठीक है, जो कि हमारा आ गया, ये कहीं होगा, ये रहा, विच इज वेक्टर्स, ठीक है, विच इज वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब क्या होता है, एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। वेक्टर्स, आप और आपका फ्रेंड एक पार्क में खड़े हैं, ठीक है, एक मान लेते हैं कि ये भैया एक पार्क है, आप और आपका फ्रेंड भैया यहाँ पे खड़े हैं। आपने क्या करा, 3 स्टेप आप आगे गए, फॉर एग्जांपल S1 S2 S3, 3 स्टेप आप आगे गए और 4 स्टेप आपने यहाँ से राइट ले लिया, फॉर एग्जांपल R1 यहाँ पे ले लिया, यानी कि आपकी पोजीशन क्या होगी 3 और अब ये बताता है कि आप किधर हो एंड कौन से डायरेक्शन में आपने मूव किया। अब यही 3 और जो 4 वैल्यू निकली यही वेक्टर होता है। ये जस्ट एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जो कि डायरेक्शन और डिस्टेंस दो चीजें बताती हैं। एक और एग्जांपल, जैसे किसी की हाइट है एंड कैसे ये हमारी अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से बात करें, राइट, या फिर हम सैलरी की बात करें तो कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं जो है इसका गोल क्या रखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या होती है, कहाँ पे हम असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं, रोजाना कैसे कर सकते हैं, एंड सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे ना, वन बाय वन कनेक्ट करके भी देखेंगे, सो दैट आप सिर्फ समझो या फील करो कि हाँ यार मैंने तो मशीन लर्निंग यहाँ पे इस्तेमाल करी। बेसिकली कौन सा डेटा जो है मशीन लर्निंग को देंगे, क्या आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं, कंप्यूटर कैसे हमारे डेटा से सीखता है, एंड साइकिट लर्न कैसे मदद करेगी, सारी चीज़ें जो है हम सीखने वाले हैं। सिर्फ कोडिंग के बारे में नहीं है, ये कंसेप्ट क्लैरिटी के बारे में है, जो कि लगभग सभी बिगिनर्स जो होते हैं उन पे मिसिंग होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पता नहीं क्यों इतना बेकार बना दिया गया कि भाई थ्योरी से आपको बिल्कुल भागना है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि मशीन लर्निंग क्या होता है क्लैरिटी के बारे में है, जो कि लगभग सभी बिगिनर्स जो होते हैं उन पे मिसिंग होता है, ठीक है। क्योंकि हम करते हैं थ्योरी तो पता नहीं क्यों इतना बेकार बना दिया गया कि भाई थ्योरी से आपको बिल्कुल भागना है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फिर सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़ो, कंसेप्ट को लेके क्लैरिटी लो एंड देन प्रैक्टिकल अप्लाई करो। सिर्फ प्रैक्टिकल के पीछे भागोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे यार, उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा तेज दिमाग वाला होना पड़ेगा। अब मैं तो उतना तेज दिमाग वाला हूँ नहीं कि बिना थ्योरी के, बिना कंसेप्ट की क्लैरिटी के कुछ भी प्रैक्टिकल करने पहुंच जाऊँ, और आपको भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। थ्योरी पढ़िए प्रॉपर, क्लैरिटी भी लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल यार, कुछ थ्योरी वगैरह नहीं कराया अपन ने। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग है क्या भैया। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल का सीन क्रिएट करूंगा, आपको बस समझना कहना चाह रहा हूं क्या स्टोरी है। मान लेते हैं कि ये आपकी एक शॉप है, ठीक है, मतलब ये काय की शॉप है, ये पिज़्ज़ा की शॉप है। अब भाई आप इस पिज़्ज़ा की लगातार आते रहते हो, तो जैसे ही आप पिज़्ज़ा की दुकान के अंदर घुसे, जो वहाँ का काउंटर वाला बंदा है, जो वेटर है, वो पहले ही समझ गया कि भाई ये सर आ गए हैं, इनको एक्स्ट्रा चीज़ पसंद है, इनको ऊपर से प्याज नहीं चाहिए, ऑनियंस नहीं चाहिए, और हाँ ये ज़्यादातर जो है 6:30 बजे रोज आ ही जाते हैं। तक देने के पैसे नहीं रहते तो कहाँ देंगे। क्या आप कहीं खाना खाने जाते हो, देते हो या नहीं देते हो, कितनी देते हो, ये कमेंट करके बता देना, पार्ट ऑफ जोक, राइट। तो बेसिकली कमिंग बैक टू द टॉपिक, वेटर को पता है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, आपको ऑनियंस नहीं चाहिए, आप 6:30 बजे करीब आते हो एंड आप टिप भी अच्छी खासी देते हो, तो आपको ज़्यादा पीछे भाग गया, इनको मैं सर्व करता हूँ। अब जैसे ही आप अंदर घुसे, भाई वेटर ने आपको बोला कि सर आपका जो पिज़्ज़ा है वो मैं क्या तैयार करना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो यार आपने कुछ उसको बोला ही नहीं, यू इवन डिडंट स्पीक, यू इवन डिडंट गिव देम ऑर्डर, बट स्टिल वो समझ गया। क्यों, आपके पुराने पैटर्न से, जब आप पहले आते थे, आप बार बार आते गए, आप 6:30 बजे आते थे, आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, ये पैटर्न उसके दिमाग में फिट हो गया, आप अच्छा टिप भी देते हो। तो माय फ्रेंड यही मशीन लर्निंग होती है। क्या होती है मशीन लर्निंग एग्जैक्टली? मशीन लर्निंग इज मशीन लर्निंग क्या होती है और हमें पता चल गया है। और लेट्स let it be till here. I can't do anymore. I'm tired. I also have to slow the chair. Okay. That's it for today, I guess. Let me just. Okay. That's it for today. Thank you for joining and bye.